both. So, but there are always a difference of opinion, because this is somebody said, okay, coconut is good. Some people say coconut is not good. Some people say coconut oil is good. Some people say coconut oil is not. So there is always a controversies. Means these are all different. So what is your opinion, and how you would like to correlate our dietary factor as far as our coronary heart diseases? I'm talking specially about this. एक्चुअली जो भी ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होंगे Yeah. वो ऑयल नहीं लेना चाहिए. जैसे कि अपना ये जो सनफ्लावर ऑयल है या सैफफ्लावर ऑयल है या ओलिव ऑयल है, इनमें अनसैचुरेटेड फैट्स का कंपोनेंट ज़्यादा होता है. तो HDL जो रहता है दैट इज़ बेटर फॉर दी हार्ट. मतलब कोलेस्ट्रॉल जो डिफरेंट टाइप के लाइपोप्रोटीन्स हैं उनमें HDL इज़ बेटर, और वो रेशियो जो है जिसका HDL ज़्यादा रहेगा उसमें ये कोरोनरी ब्लॉकेजेस होने के चांसेस कम है. तो LDL इज नॉट गुड, मतलब लो डेंसिटी. कोकोनट वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट. या वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए कोकोनट ऑयल. उसकी बजाय जो है अगर सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर या फिर जो है कोनोला भी यूज किया जा सकता है. ओलिव ऑयल एक्सपेंसिव है तो इसलिए जो है मतलब सनफ्लावर तो मिलता ही है और सैफफ्लावर तो सफोला है. So in short that coconut का restricted use ही better है. ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, ये सब जो है थोड़ा restricted use होना चाहिए. Doctor, I think we have got a call. Hello. Hello. Hello, doctor. म्हजो प्रश्न आहा असो. कसो? आता हार्टा येलो मनीषा आता सांगिला कोकोनट ऑयल बन न्हू आनी पयले मुगे दोतरान सांगलोलें बन न्हू. फाटीन दोतरान सांगिलें कोकोनट ऑयल बरी आनी सगळ्यां परस गोट एश मुंगा टीव्हीचे एक पाट दोतरान सांगिन म्हणटरी ओ मुगे घोव आतां कोकोनट ऑयल खावपा सोदिता आनी ते खायल्या बरे ओ दुसरी खायल्या बरी. आनी दुसरो प्रश्न म्हळ्यार आतां पयलीं आवयच्या पोटां आसतना भुरगें कांय कोणा भुरगीं बरें आहा म्हणटा दोतोर. आनी जावन एक म्हयनो देखून जायनासतना तांकां हार्टा येता. मडगांव एक दोतोरा बगलें हांव कोणा विजिटा गेले तेदोना 15 भुरग्यांक ल्हान ल्हान हार्टा येयले म्हूण. पूण पयलीं पोटां आसतना आवय कोणा कांय कोणा हें केश जाता दोतोर. आता कळना हाचो प्रश्न मातसो ट्रिकी आसा खरो म्हणजे. बट एनीवे, so what is the question? So actually she has taken over the same clue that we are discussing about that coconut oil. So somebody she said that okay, coconut oil chalta hai, so her husband started using coconut oil. So again, but I think you have already answered this question की दोतोर आता ऑलरेडी सांगला की कोकोनट ऑयल कमीत कमी वापरपाचे आनी तसो नाल्लाचो वापर सुद्दां कमीत कमी केल्यार बरो. सी इट इज नॉट, सी वॉट इज गुड यू हॅव टू ऑलवेज स्टिक टू दॅट. हें एक जालें. आनी दुसरें म्हणजे वॉट वॉज सेकंड क्वेश्चन शी आहा दॅट why she's saying that lot of children are found with heart diseases, and she's asking that why they are not detected in the intrauterine means when the baby is in the this thing in the आजकल डिटेक्ट हो रहे हैं. आप इंट्रायूटराइन गेस्टेशन में जो है अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो भी रहे हैं. तो वो किए जा सकते हैं. ये है कि उतना मतलब जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज हैं वो काफ़ी रेयर हैं. तो और उसमें जो भी आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो तो एक्सपर्ट होकर डिटेक्ट करना चाहिए. डॉक्टर म्हणटा की जे म्हणजे ज्या दोतोरा कडेन तुमी अल्ट्रासाउंड करता ताची मशिनरी, ताचें ज्ञान, तो अनुभव आसता ते खुबशे फावटी डिटेक्ट जावं शकता. पण चडशे फावटी डिटेक्ट जाले म्हणून आमी ते भुरगे पोटान आसतना व्हडलेशें आमकां काय करपाक मेळना. सो ते जन्म जायसरच रावचें पडटा. एक जालें. आनी दुसरें म्हणजे ते व्यवस्थित योग्य वयार आयल्या उपरांत जशें डॉक्टरान सांगलें की त्या वेळार तशें कंडिशन आसता त्या प्रमाणे मागीर ताचें ऑपरेटीव करेक्शन जें आसा तें करचें पडटा. कारण सगळ्यांकच ऑपरेशनाची गरज पडटा अशें न्हय. थोडी ऑपरेशनां लेट करची येता, थोडी ऑपरेशनां बेगीन करची पडटा. ते भुरग्याचें कशें प्रेझेंटेशन आसा, कशी ताची चिन्ह आसा हाचेर सगळ्याचेर डिपेंडंट आसता. डॉक्टर, आय थिंक वी हॅव गॉट अनदर कॉल. हॅलो. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. व्हेरी गुड इव्हनिंग. I went to angioplasty 7 years back. Yes. And I have no problem till now. Very good. I maintain everything what is required. Fantastic. I want to know how long the angioplasty can last. What is your age? My age is 67. Acha, what is your job, profession? I retired. Good. And what are your, because see, through your questions and your this thing only, I want the message to be conveyed to the people. You tell me what are your activities? Like my activities are half an hour minimum walk every day. Absolutely. My eating habits are completely normal. That is, I don't eat any fatty food and all. Very good.
and I take my medicines, Very good. and I don't bother over anything because I have no worry at all. I must congratulate you. In fact, one day I want to come and sit with you, how you can manage and stay without any worries. No, So definitely I would like to come to your gender. After retirement, what is required is little money, a small place to sit, to lie your head. Yes, yes. And if children are well settled, no problem, doctor. Correct. Very good. In fact, this is what we always tell people, but I'm very happy that you have told us this is your lifestyle and that's what you have Yes, been but doing I quite want to know well. that how long I'll be able to do it. Don't worry, you'll live for a long time. No, yes, you should doctor. be all right. What you can do is like you can go and have a stress test sometime. वो ट्रेडमिल वाला टेस्ट रहता है Yeah. एंड उसके अलावा आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है. और जैसे मैंने लाइक एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज़ लाइक जो भी आप करवा रहे हैं इट इज़ पैलिएटिव. तो अगर आप जैसे बोल रहे हैं एक्टिव रहते हैं, यू आर ईटिंग अ गुड डाइट और आपका डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो द स्टेंट विल कीप ऑन वर्किंग और बट ग्रेजुअली इट विल बेसिकली गेट ब्लॉक्ड सम टाइम. तो उसमें यह है कि अगर आपने पिछले एक आध साल में अगर अपना चेकअप नहीं करवाया है तो चेकअप आप करवा लीजिए. उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. So basically, a good, healthy lifestyle, and as doctor has rightly advised, see, there is a stent. So definitely, it is advisable that you go for your stress test or consult your cardiologist, and keep in touch with your heart internally as you are doing externally. I think, doctor, we have got another question. Hello. Yes, hello. Hello. Tell me. Hello. Yeah. Doctor, actually, basically, one of my close relative Yeah. had a bypass 8 years back. Yeah. And that time he was around 35 years old. Yeah. Now he goes back to work, he's normal, he does all his stress tests, Yeah. he does his cholesterol, everything is back to normal. Good. And the first question, basically what doctor had answered was that there should be at least 10% people has to go again bypass surgery. But even after having all this normal, your stress test, your cholesterol, every year it has been done. Yeah. Still there's a possibility where a person has to undergo again a bypass because his cholesterol, his stress test, everything is normal. नहीं, वो bypass कोई like it's not necessary that he may have to undergo a bypass surgery. The new vessels that were put, they can be angioplastied also. Correct. So it's not necessary that he may have to undergo bypass, and he was only 35 years old. Correct. So at some because he's so young, at some stage he may have to undergo something else. I don't think throughout his lifetime he'll be able to avoid another operation or angioplasty. So basically, as you have rightly said, since he is young and Yeah. since all his parameters, the lady is saying, are under normal this thing. So only as per the need, later on. Yeah, later on, if he's fine, if he's not having and symptoms, second, very he doesn't important, need to have anything done. Correct. And absolutely one important statement what you have made, there is 10% of the people. It is Yeah. not that 100%. Yeah. So 10% of the people may require as per their lifespan and how much is the, how patent are the vessels. But the thing is, he's very young. He Yeah. was only 35 years Correct, old, so correct. something will need to be done for him. in course of time. And in fact, I've seen a 5th time redo like abroad. So there they don't really bother. So like he was having a bypass surgery for the 5th time. So because he had one at a very young age. So, but hopefully like He will do well. Yeah. Let's hope for the best. Doctor, we have got another question. Hello. Hello. हॅलो. हाँ विचारात. हांव संजय नार्वेकर उलयतां. या. म्हाका कितें जाता, हांव 47 इयर्स. म्हाका नांव येतकीर ब्रेथलेस जाता. हां. फक्त नांव येतकीर. मातशें चल्लो पायरो चडलो जाल्यार मातशें ब्रेथलेस जाता. हां. पण तुम्ही डॉक्टराक मेळ्ळा? नांव येतकीर कित्यान जाता म्हाका? नाही तुम्ही ह्या खातीर डॉक्टराक मेळ्ळा, डॉक्टराचो सल्लो घेतला काय विचारता हांव. तुम्ही ह्या खातीर डॉक्टराक मेळ्ळा नार्वेकर बाब? ना. Okay. This gentleman is Mr. Narvekar, 47 years old. He wants to know, means he gets breathlessness after having bath and climbing some step. But he has not taken any medical opinion till now. I think perhaps he must have chosen this as a shortcut. किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिल लीजिए और आपको अपना इको और स्ट्रेस टेस्ट करवाना पड़ेगा. क्योंकि आपका या तो
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जैसे आर्टरीज में ब्लॉकेजेस, या वाल्व की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन दो कारणों से आपको अगर सीढ़ियाँ चढ़ने पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो यही रीज़न हो सकते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। ॲब्सोल्युटली. म्हणजे तुम्ही डॉक्टरांनी सांगला त्यामुळे मी कार्डिओलॉजी म्हणजे हार्टाच्या स्पेशलिस्टाचो सल्लो घेयात. मातशे हे असे बेठेच इग्नोर करत रावू नाकात, ते चड जायसरूय रावू नाकात, कारण एखाद्या वेळा ही बारीक बारीक चिन्हां किंवा लक्षणां फुडें येवपी काळजाच्या दुयेंसाची म्हणजे प्री रेक्विजिट असू शकता किंवा म्हणजे नांदी अशें म्हणूं येता, पण ती एकदम वेळेसर रावू नाकात आनी अशें आंगारूय तोलून रावू नाकात आनी जमता अशें म्हणून जस्ट डोंट टॉलरेट इट. म्हाका दिसता डॉक्टरान तुमकां बरो सल्लो दिल्लो आसा. आनी ह्यो ज्यो टेस्ट तांणी सांगल्यो होत्यो, एक वेळ तुमकां इको टेस्ट किंवा स्ट्रेस टेस्ट करतकूच तुमकां एक्झॅक्टली ताचें कितें फरक आसा तें कळटलें आनी त्या प्रमाणे ताची मॅनेजमेंटूय जातली. वेळार योग्य हाताळणी केल्यार तुमी पूर्ण बरे जातले, तेन्ना मातशे अशें डिले करत रावू नाकात. वी गॉट अनदर कॉल. हॅलो. Hello. या विचारात. Hello, doctor. I am Rajesh calling from Sankwal. या राजेश बाब बोलिए. Sir, I would like to know about the heartburns, the causes and the prevention about this. हार्टबर्न जो है, एक तो अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो आपको अगर एसिडिटी होती है या जो स्टमक का एसिड है उसका रिफ्लक्स होता है, उससे भी हो सकता है. और दूसरा वो सबसे कॉमन कॉज तो ये, मतलब कॉमन तो नहीं बोलूँगा, सबसे कॉमन कॉज वैसे वो एसिड रिफ्लक्स ही है, बट वो हार्ट डिजीज़ की वजह से भी चेस्ट पेन भी हो सकता है. तो अगर आपको हार्टबर्न हो रहा है तो उसमें आप जो है वो एसिडिटी कम करने वाली दवाई 2 हफ्ते ले सकते हैं, और उसके बाद भी अगर हार्टबर्न कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपना मतलब हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए. और उसके अलावा मस्कुलर पेन्स वगैरह भी हो सकते हैं, बट अगर वो पेन किलर्स वगैरह लेने से नहीं जा रहे हैं तो इट इज़ बेटर, अगर आप 35 से ऊपर की एज है तो इट इज़ बेटर टू गेट अ हेल्थ चेकअप. डॉक्टर डॉक्टर, आई थिंक वी हैव गॉट अनदर कॉल. हेलो. Hello. या. I would like to know, my mom has got cholesterol, so I would like to know what's the diet for cholesterol. No, cholesterol means what is her level? How much? It's 244. 200. And you have got HDL value and LDL values? She doesn't know about that. नहीं, उसका मेन थिंग ये है कि लो फैट डाइट आप खाना शुरू कर दीजिए. मतलब वो तो अपने को भी पता है क्या चीज़ खानी है, नहीं खानी है, किसमें फैट ज़्यादा होता है, तो उसको उससे कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये है कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग वो आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर आपको उसका रिस्क नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो उनको लेने का ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो मतलब और 244 कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, आप डाइट से उसको 200 के नीचे ला सकते हैं. सो व्हेरी इंपॉर्टंट झालं की जसं डॉक्टरांनी की तुमचं डायट, तुमचे आहार, तुमचा एक्सरसाइज हे जर तुमच्यानी करून जर तुमचे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल येता जाल्यार बेस्ट. म्हणजे गुळयो ज्यो आसता त्याचो चड उपयोग करपाची गरज ना. ओन्ली सपोज इफ रियली डिमांड्स की बाबा तुमचे एज आणि तुमचे बाकीचे पॅरामिटर्स खूप जसे कोलेस्ट्रॉल खूपच हाय आसा जाल्यारच घेवपाच्यो, कारण त्यांचे ओन सायड इफेक्ट्स आसता. So I think as doctor has already advised, let's follow a good healthy lifestyle. Let's take a small break and then we'll start again.